अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पेडागोजी, जिसके लफ्ज़ी मानी है इब्तदाई तालीम। अगर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि ये देखने में बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन पेपर में ये हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं। इसलिए इनके कंसेप्ट्स क्लियर और इन्हें अच्छी तरह से तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। द डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय ऑप्शन ए programmed instruction, B experimentation in a science laboratory, option C team teaching or none of these। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी experimentation in a science laboratory। Number 2, a young child responds to a new situation on the basis of the response made by him her in a similar situation as in the past. This is related to law of analogy of learning, law of effect of learning, law of attitude of learning process, or option D none of these। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी law of effect of learning। Students who ask questions in the class should be option A advised to meet the teacher after the class, option B encouraged to participate in the discussion in the class, option C encouraged to continue asking questions, या option D none of these। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी encouraged to continue asking questions। मतलब एक बच्चा जो क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछता है उसे encourage करना चाहिए। Dash is the best process of communication for controlling noise in a classroom. Option A saying don't talk, option B raising one's voice above students' voice, option C remaining calm and just looking at students, option D none of these। Correct option is option C remaining calm and just looking at students। Question number 5, children's attitude toward persons of different ethnic group are generally based upon option A their parents' attitudes, option B the attitudes of their peer, option C the influence of television, option D none of these। Answer is option A their parents' attitudes। When a pupil's misbehavior persists even after the teacher punishes the child for each infraction, the teacher is probably practicing a policy of option A retribution, option B corporal punishment, option C negative reinforcement, option D none of these। The right option is option C negative reinforcement। Question number 7, good teaching is a function of option A sincerity and devotion to the profession of teaching, option B high academic qualification of the teachers, option C principals powerful leadership in the college, option D none of these। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए sincerity and devotion to the profession of teaching। Next is the insight theory of learning was augmented by option A Gestalt theorist, option B Pavlov, option C Jean Piaget, option D none of these। The right option is option A Gestalt theorists। The teacher introduces a problem solving lesson with a good motivation and then asks for proposed solutions. No suggestions are forthcoming. The teacher is best advised to option A stimulate pupil thought by advancing a few personal proposals, option B tell the students to read their text, option C show an interesting film strip, option D none of these। The right option is option A stimulate pupil thought by advancing a few personal proposals। Number 10, of the following activities in a science class, the one with least educational value is option A
viewing a film strip. Option B, constructing a model. Option C, reading about a simple experiment. Option D, none of these. जी तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मतलब एक साइंस क्लास में एजुकेशनल जो सबसे कम वैल्यू है, जो लीस्ट वैल्यू है, वो है रीडिंग अबाउट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, कि किसी भी तजर्बे के मुतल्लिक़ खाली या सादा उसे पढ़ाया जाना, ये एजुकेशन में सबसे इसकी कम वैल्यू इस चीज़ की, एक साइंस क्लास में। आ साइकोलॉजिस्ट यूजिंग द मेथड ऑफ naturalistic observation would. Option A, carefully design controlled situation in which to observe behavior. Option B, rely on observations of subjects' responses to questionnaires. Option C, observe behavior as it happens outside the laboratory or clinic. Option D, none of these. The right option is option C, observe behavior as it happens outside the laboratory or clinic. If a student is good at sports but not interested in studies, you will. Option A, advise him to leave the sports. Option B, inform his parents. Option C, encourage him and convince about importance of education. Option D, none of these. The right option is option C, encourage him and convince about importance of education. Which is the incorrectly associated pair? Option A, Joseph contract plan. Option B, Benjamin Academy. Option C, James B High School. Option D, none of these. इनमें इनकरेक्टली एसोसिएटेड जो पेयर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि जोसेफ एक इंग्लिश एजुकेटर थे, ना कि कॉन्ट्रैक्ट प्लानर। नंबर 14, टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट. ऑप्शन ए, मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स. ऑप्शन बी, labeling students as intelligent or average learners. Option C, using a variety of ways to collect information about the students' learning process across the scholastic and co-scholastic boundaries. Option D, none of these. Correct option is option C, using a variety of ways to collect information about the students' learning across the scholastic and co-scholastic boundaries. In an experiment to find out if taking ginseng increases IQ scores, the IQ scores would be. Option A, the dependent variable. Option B, a control variable. Option C, an extraneous variable. Option D, none of these. इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जिसके मानी हैं गैर मुतल्लिक या बैरूनी वेरिएबल. The competency of a teacher can be judged on the basis of option A, publication of books. Option B, length of service. Option C, meeting needs of students. Option D, none of these. The right option is option A, publication of बुक्स. मतलब एक टीचर की जो कॉम्पिटेंसी है वो हम अगर जज करना चाहें तो वो पब्लिकेशन ऑफ बुक्स की बेसिस पे जज की जा सकती है. द स्मॉल मशीन यूज्ड इन द रीडिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज रेट ऑफ स्पीड इज द. ऑप्शन ए, नमोनिक डिवाइस. ऑप्शन बी, स्फिग्मोमोनोमीटर. ऑप्शन सी, टेकिस्टोस्कोप. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टेकिस्टोस्कोप. 18, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइंस दैट अ चाइल्ड इज गिफ्टेड एक्सेप्ट. ऑप्शन ए, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ टाइम. ऑप्शन बी, इंटरेस्ट इन encyclopedias and dictionaries. Option C, uneasy relationships with peers. Option D, none of these. Right option is option C, uneasy relationships with peers. Parents should play dash role in the learning process of young children. Option A, negative.
option B proactive, option C sympathetic, option D none of these. Right option of this question is option B proactive. Question number 20. Development is a never ending process. This idea is associated with option A principle of interrelation, option B principle of continuity, option C principle of integration और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जी तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब जो डेवलपमेंट है ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये आइडिया जो है ये एसोसिएटेड है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के साथ। 21. The individual develops through the head, the heart and the hand. This was the educational philosophy of option A Herbert, option B Comenius, option D Pestalozzi, option D none of these. Correct option of this question is option C. Next, blackboard can be included is a dash teaching aid. Option A audio aid, option B visual aid, option C audio visual aid, option D none of these. The right option is option B visual aid. 23. An essential of learning called dash is the one that takes procedure over the other. Option A desire to learn, option B ability to read, option C an intact home, option D none of these. The right option is option A desire to learn। मतलब लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें सबसे एसेंशियल जो चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है वो है ऑप्शन ए डिज़ायर टू लर्न। 24. After a lesson is taught, the teacher's lesson plan should be option A sent to the supervisor for evaluation, option B annotated, option C filed for use by a substitute teacher, option D none of these. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेंड टू द सुपरवाइजर फॉर इवेल्युएशन। द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ एन ऑप्शन ए इन्वेंटरी टेस्ट, ऑप्शन बी प्रोजेक्टिव टेस्ट, ऑप्शन सी सर्वे टेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्रोजेक्टिव टेस्ट। मतलब एक पर्सनैलिटी का जब हम एवेल्युएट करते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 26. द चाइल्ड्स कोग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे इन ऑप्शन ए प्लेग्राउंड, ऑप्शन बी स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। Right option is option B school and classroom environment. Question number 27. Dash is not a product of learning. Option A maturity level, option B skills, option C attitude, option D none of these. इसका दुरुस्त ऑप्शन ए होगा मेच्योरिटी लेवल। मतलब मेच्योरिटी लेवल जो है ये लर्निंग की प्रोडक्ट नहीं है। 28. डैश इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल्स, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। मतलब ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चन और आस्किंग क्वेश्चन जो है ये तमाम जो है ये टीचिंग स्किल्स के रिलेटेड है। 29. इन डैश चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप, ऑप्शन ए एडolescence, ऑप्शन बी अडल्टहुड, ऑप्शन सी अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए adolescence. Character is developed by option A willpower, option B conduct and behavior, option C morality, option D all of the above. Right option of this question is option D all of the
above.